Praise the Lord. Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Today, I would like to talk about faith. What is faith? How will come faith? The Bible says, faith comes by hearing by the word of God. Romans chapter 10, 17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. We look from Bible an example, Matthew chapter 9, 20. And behold, a woman was diseased with an issue of blood for 12 years, came up behind him and touched the hem of his garment. For she said to herself, I may but touch his garment, I shall be whole. But Jesus turned about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort, the faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour. What she believed, if I may but touch his garment, I will be healed. If I only touch his cloth, I will get well. If I can just touch his robe, I will be made well. She believed, touched the edge of his cloth. The woman was healed at that moment. Instantly the woman was made well. And the woman was made well from that moment. Mark chapter 11, 22, Luke chapter 17, 5. To increase our faith, what should we do? We should read the Bible every day. We should pray to God every day. We should listen the word of God every day. Why should we read the Bible or word of God every day? Because word of God heals you. Word of God encourages you. Word of God light unto your path. Word of God is a lamp unto our feet. Word of God is path for our way. Word of God is bread of life. Word of God is living water. Word of God strengthens us. Word of God saves us. Word of God saves our lives and our family and everyone. Word of God is powerful. Hebrews chapter 4, 12 verse. Pray to God every day. In the Bible, some people prayed in the morning, evening, afternoon. Abraham prayed to God in the morning. Isaac prayed to God in evening. Jacob prayed to God throughout the night. David prayed to God 3 times a day. Solomon prayed to God for wisdom. Daniel prayed to God 3 times. Peter prayed at afternoon. Cornelius prayed to God afternoon 3 o'clock. Elijah prayed to God for rain. Job prayed to God early in the morning. How should we pray to God? We have to pray daily without faint. We have to pray according to God's will. We have to pray for each other.
We have to pray for sick people. We have to pray for Jerusalem. We have to pray for authorities. We have to pray to God for all peoples. Listen to word of God. Acts 16:31. If you want to save all your family, believe in Jesus Christ. Noah believed in God and saved from the flood in 40 days. The windows of heavens were opened. All people, mankind, and creatures died. But Noah's family was saved by faith, by listening to God. We look here in Acts 16:31. Jailer family was saved. We are justified by faith apart from works of law. Romans 3:28. Abraham is the father of faith. Ephesians 2:8 verse. We have been saved by grace through faith. 1 Corinthians 16:13. Be watchful, stand firm in the faith. We have to listen to Jesus Christ. Galatians 3:26. For in Jesus you are all sons of God through faith. 2 Thessalonians 3:3. Lord is faithful. Hebrews 11:6. Without faith it is impossible to please to God. Conclusion, Colossians 2:5. We need standard faith, firmness of your faith. 1 Timothy 1:1-5. We need pure heart and sincere faith. Luke chapter 7:9. We need great faith. 1 Peter 1:7 verse. We need precious faith. Jude 20 verse. We need mostly holy faith. Thank you. Praise the Lord. God bless you. ये कितने का है? हाँ, ये 10 दिनार का है। और ये वाला? ये 15 दिनार का है। 15 दिनार? अच्छा वो लाल वाला दिखाओ। हाँ हाँ वो। देखने में अच्छा है और बेहतर भी। बहुत अच्छा है। इसका दाम क्या है? ये 25 दिनार का है। 25 दिनार? 25। आप कितने में खरीदोगे? मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, खरीदूंगा बाद में। मैं तो किसी का यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। सुना है प्रभु यीशु यहाँ से गुजरने वाले हैं। प्रभु यीशु की आजकल काफी चर्चा है। तुम जानते हो यीशु ने फिर से चमत्कार किया है। अच्छा, कहाँ? क्या हुआ था? गलील के सामने गिरासीनियों के देश में जब यीशु वहां पहुंचे तब वहां एक मनुष्य बहुत सी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। उससे उन्होंने छुटकारा दिलाया और वो अच्छा भी हो गया। बारह साल से मैं वैद्यों के पीछे अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर चुकी हूँ, तो भी किसी के हाथों चंगी ना हो सकी और रोगी हो गई। अगर कोई मुझे यहाँ पहचान लेगा तो मुझे अशुद्ध पाकर दूर हटा देगा। अच्छा, तुम्हें यह सब कैसे मालूम पड़ा? कुछ चरवाहे इस पूरी घटना को देख रहे थे और जब वो मनुष्य अच्छा हो गया तब उसने इस बात को सब जगह फैला दिया। ये शोर कैसा है? लगता है प्रभु यीशु आ गए। हम लोगों को चलना चाहिए। चलो चलो चलो। प्रभु 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 हमें सही मार्ग दिखाओ। प्रभु हमें छुटकारा दो प्रभु। प्रभु प्रभु आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु धन्य हो गया। प्रभु हमें आशीष दे प्रभु। अरे भाई, हमारे जीवन में सुख शांति दे प्रभु। आप लोग हटिए, प्रभु को रास्ता दीजिए।
किसने छुआ? ये प्रभु का कैसा चमत्कार हो गया, मैं चंगी हो गई। मुझे किसने छुआ? हे रब्बी, आप देख रहे हैं भीड़, ये सब आप पर गिरे पड़े जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको किसी ने छुआ? नहीं नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। मेरे भीतर से सामर्थ्य निकला है, मुझे किसी ने छुआ है। प्रभु, मैं 12 साल से लहू बहने के रोग से बहुत पीड़ित थी। आपको छूना चाहती थी ताकि चंगी हो जाऊं, और आज आपको छू के मैं चंगी हो गई। बेटी, तेरे विश्वास ने ही तुझे चंगा किया है। कुशल से जा, परंतु इस बीमारी से बची रह।